सो हेलो 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 हेलो, याद है ना कौन हूं मैं? नीरज गाबा, आपका मिस्टर गाबा। ओवर द इयर्स आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर मॉडलिंग क्या है, मॉडलिंग फील्ड के अंदर कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आई सेड, आप लोग जहां पे भी आप हो, चाहे आप पंजाब में हो, चाहे आप गुजरात में हो, चाहे आप डीप डाउन साउथ में हो, चाहे आप कश्मीर में हो तो आप इंडिया का पार्ट ही ना। सो आई रियलाइज व्हाई नॉट गो अहेड एंड कम अप विथ समथिंग which will एक level पे provide information to everybody on the field of modeling in India and how models from India can go abroad. That's why talent polish करवा लो, talent polish करवा लो। कहां पर? Modeling and its world with Mr. Gaba के अंदर। यहां पर हम आपको बताएंगे कि मॉडलिंग क्या है, कौन मॉडल बन सकता है, कौन मॉडल नहीं बन सकता है, किसको मॉडलिंग की कोशिश करनी भी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, करने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या नहीं पता होना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए और क्या क्या नहीं सीखना चाहिए। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू से नो टू थिंग्स। व्हेन यू नो व्हेन टू से नो टू थिंग्स इज व्हेन यू आर गोइंग अहेड एंड रीचिंग समवेयर इन लाइफ। तो हम आपको इस जर्नी पे लेके चलेंगे बहुत सारे इस इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ। When I say दिग्गज, they all are very, very, very experienced models, backstage people, and let's see who all come and join in. So, are you ready? Are you ready to go ahead and learn about what is modeling? How can you or your friend or one family member be a model? If you want to learn that, come and join us. देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यह बात याद रखना कि मॉडल बनने के लिए बहुत जरूरी होता है खुद को जानना। तो हम वहीं से शुरू करेंगे इस जर्नी को। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड, डू यू इवन हैव इट इन यू टू बी अ मॉडल? बिकॉज हर एक इंसान अगर डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, तो हर एक इंसान मॉडल भी नहीं बन सकता। तो देखते हैं कहां लेके जाती है जर्नी हमें। चलें, शुरू करते हैं, आइए। आज भी मैं शूट पे जाती हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि you know, you're looking very nice. I know I'm looking very nice. I have a mirror. I'm not being rude, but I'm being realistic and practical. My first aim is supposed to be in the Go. I've done my army training here for 6 months and मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी में गोरखपुर से। गोरखपुर, या ओके। छोटा सा सिटी है, इंडिया लिटरली वहाँ खत्म हो जाता है, नेपाल शुरू होता है। कि हाँ गांव से है, हिंदी आती है, इसको क्या है, छोड़ो, एक्सक्लूड करो। आज से कुछ समय पहले तक आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्टर्न फेसेस को इतनी मान्यता, इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी मॉडलिंग में? No. You have to listen to the no every single time you meet somebody. You know, वो आपको कंडीशन देंगे, आप बोलेंगे नो, वो आपको बोलेंगे नो. Do you have the courage to say no? So many times, every time you feel like you're leaving a job because you are not ready. और यू आर नॉट कंफर्टेबल। ग्लिट्स एंड ग्लैमर जो है वो खाली बाहर है, अंदर क्या है वो 5 स्टार का होटल का ग्लिट्स एंड ग्लैमर, एक ही ग्लिट्स एंड ग्लैमर होता है और फिर बेसिकली ग्राइंड होता है। ट्रांस पर्सन को हमेशा देयर आर सो मेनी डिस्क्रिमिनेशन जो अभी भी करती आई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सपोर्ट करने वाले नहीं है। The shyest people can be the best models because they love the mirror, they can act, they can turn it on. You have to give it some time. ऐसे नहीं कि चलो आप become a model तो 1 महीने में हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। नहीं होता। You have to give it time. You have to be realistic. Try करो. You will be rejected. Auditions पे जाओ, reject होंगे. Keep trying. Very good. सबको लगता है कि वो ब्यूटी पैशन कर लिया, सब हो गया तो मॉडलिंग बहुत इजी हो जाता है, बट नो, वो बहुत बड़ा फर्क है उसमें। Output of them coming on a stage with that wave and coming as a fashion model, literally sometimes it is diametrically as opposite as it can be. You're selling a watch. You're angry. Now a model represents much more. Yes. Now a model needs to represent diversity, inclusivity. She needs to represent
a new standard of beauty that's inclusive. खाली lip service है कि सच्ची कार दे पहने कदी sometimes I feel sometimes I don't because sometimes designers बोलते हैं अरे यार ये तो पतली मोटी छोटी आ गई but then I say आप ही तो लोग बोल रहे हो inclusive चाहिए. And I think it's been a really interesting shift from being a clothes horse to somebody that represents our idea of beauty and sort of represents it in a dynamic way. As beauty changes, he or she or they must represent that. We are open to a lot of other sexualities coming in, like we have transgenders as models, we have plus sizes, we have the skin color acceptances. That's not only about we get requirements, dusky girl, so it's nice. एक इस इंडस्ट्री में बोला जाता है कि शादीशुदा मॉडल अगर आपने शादी कर ली तो आपको काम नहीं मिलेगा. सोनालिका, सपना, लक्ष्मी. Basically, I'm married, but the thing is. और दूसरा, अगर आप प्रेग्नेंट है या आप मदर हैं तो भी आपके काम मिलने के चांसेस डिमिनिश. Did it happen to you at all? Of course it does. Of course, it happens in the way that your body changes. So you are not the ideal body shape for a show. So the thing is, like I said, one of your criteria is to keep your body and your skin in shape. Yeah. So the thing is, a lot of designers do want a certain body size and a body shape. Yeah. The thing is, there are people that are now becoming inclusive, Yeah. gender inclusive, neutral, size inclusive, all these sort of things. So the thing is, the industry has expanded like that. But the thing is, mainly, there is a certain size for a model, a height and a size, and that is extremely, extremely important because most designers want a canvas which is straight, raw, simple, where they can use you literally as a hanger. Bollywood casting couch exists for the women. Yeah. I would say in this industry, a lot of the casting couch exists more for the men. Who gets paid better here? Female models, male models in this industry? Female. Okay. Back in the day, there was something called a supermodel. Yeah. And I do miss the supermodel. शुरू करते हैं. मॉडल होता क्या है? What is a model? पहले तो मॉडल होते कौन कौन हैं? मेल मॉडल्स होते हैं, फीमेल मॉडल्स होते हैं, then there are transsexual models, there are gender neutral models. There were big models, there were plus size models, there were extremely dusky models, there was transgender models. I mean, how much more inclusivity on one platform they have put it out. So अगर आपके दिमाग में कहीं से ये आता है ना कि आप अगर ट्रांससेक्सुअल हैं, अगर आप जेंडर न्यूट्रल हैं, तो वहां पर आपको कितना स्कोप मिलेगा? स्कोप बहुत है. सबसे पहले when you disclose your identity, वही सबसे मुश्किल चीजें होती है. You have to fight for this. And उसके बाद है अगर as a profession, as a model बनना चाहते हो, तो it's like another layer, another level and another challenge for me. Like everyone, जब मैं कर रही थी मैं खुद पे डाउट थी कि मेरा तो जैसे कि फैमिली को कैसे बना, किसी कोई भी था ही नहीं. तो like I was like doubting myself only कि अब 2-4 साल कर लिया क्या होगा. उसके बाद जैसे कि देखती हूँ तो सब मॉडल्स लोग 3-4 साल करते हैं, फिर दूसरा प्रोफेशन में जाते हैं, क्या करते हैं. और मैं भी जब मॉडलिंग करे तो सब लोग बोलते हैं नेक्स्ट क्या है, अगर मॉडलिंग नहीं हो तो तेरा सेकंड ऑप्शन क्या है, कुछ हमेशा ऐसे होना. अभी भी ऐसे बोलते हैं. लाइक मैंने सोची मैं कुछ भी करी नहीं, सोच लाइक मैं ऐसे ही दिखती हूँ कि हर टाइम में मिरर में देखती हूँ मैं मॉडलिंग की सिवा तो आई डोंट नो कुछ कर सकती हूँ. लाइक माय बॉडी, माय फेस, like it's very challenging and like I think you just have to believe yourself and keep trying. कि खुद को बिलीव करना चाहिए कि आज मैं यहाँ तक हूँ तो मैं कोशिश करते करते यहाँ आए. तो आई डोंट नो कि सबसे पहले खुद पे वो होना चाहिए, अंदर होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ. ऐसा नहीं कि कोई ट्राई करे मैं भी ट्राई कर लूँ. सबसे पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए. I think ये लोग इसलिए बोलते होंगे because कैसा है modeling, the kind of jobs that we get, unless you are like a full-fledged model, like if you are a full-fledged model, the kind of work that comes to you is so a busy model would be like working 10 days a month, right? But then I think in order to have a lifestyle, you need to have something permanent on the side, and rather also keep exploring your passion, which is modeling. Is male modeling a career?
passive. 50-50. Be honest about it. You got to find something else, man. Yeah. मेल मॉडल्स का क्या है कि अगर एक मॉडल चाहिए तो हमारे पास 1000 मॉडल्स हैं और अगर फीमेल मॉडल्स में हमें एक मॉडल चाहिए तो हमारे पास 500 मॉडल्स हैं. सो यहाँ पर मेल मॉडल्स का स्ट्रगल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं टू चूज फ्रॉम. Yes, I think it's a better career now than it was earlier. Earlier male models, I used to say this is the one industry where it's reverse sexism because they didn't count at all. They were seen as props. Yes. What's really wonderful is that men are shopping more than women. Most of our categories, men buy more than women. And men's purchases are more like, okay, I need 6 of this and 4 of that and da-da-da. And they don't need to call anyone and they don't go in groups and have many questions. The male shopper engages with shopping very functionally. Therefore, if there's greater consumption for clothes, models are the people who are going to tell you how to do it. Again, I say that models now are not just wearing clothes. Like most models have another gig, or they'll be a fitness trainer, or they will be an influencer, or they cook. I mean, it's so interesting. And I think as men get more and more in touch with themselves, you know, male models represent that. I think male modeling is a great career now. आज की डेट में मॉडलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ओपन इंडस्ट्रीज व्हेन इट कम्स टू वेरिड फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सेस सेक्सुअलिटी. पहले ये सोचना चाहिए मॉडल होता क्या है. मॉडल इज somebody who goes ahead and embodies somebody's vision on their body. प्रोफेशनल मॉडल क्या होता है? प्रोफेशनल मॉडल्स. कैरल स्पोकन हिंदी. अगर आपको 5 पॉइंट्स बोलने हो. I think the most important is to make sure that your body and your skin and everything, because you are supposed to be a canvas. They are supposed to be able to put absolutely anything on you. Lovely. And you're supposed to look good. Fantastic. And you're supposed to sell the product you're wearing. So even if it's something that you hate and Wow. you're not happy with, yes, your job is to love it and sell it. Wow. It's a serious job. It's a very very serious job because ये आपके ऊपर है. because अगर वो डिजाइनर उस प्रेजेंटेशन से अपने ब्रांड को इंटरनेशनल मार्केट में अप्रोच कर पाया, that's how industry is growing. That's how you growing. मॉडलिंग एक वो करियर है जहां पर आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, आप किसी और की क्रिएटिविटी को अपना बनाकर उसको और एक्सेंचुएट करके ऐड ऑन करके आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपकी मूवमेंट से, आपके रुकने, देखने, कैमरा के साथ इंटरैक्ट करने की और सारी चीजें जो कि आप बहुत कुछ सीखते हैं जब आप मॉडल बनना चाहते हैं, आप इन सब से उस क्रिएशन को अपना बनाते हैं और अपना बनाने के बाद उसको बेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. You know, I celebrate individuality in everybody and in a model more so because she is the physical face of what we're expecting. Yeah. You know, fashion is not just clothes, right? Fashion is how we're thinking, our politics, our economics. A model is the face of fashion. Yes. So a model needs to be individual. पहले एक टाइम होता था जब मॉडल्स को माना जाता था कि सिर्फ पतले हो तभी मॉडल बन सकते हो, बॉडी बनी हुई है तभी मॉडल बन सकते हो. बट नाउ दैट इज नॉट द टाइम. They have a theme, you know, with their collection, and I can say this time we want androgynous models. This time we want really manly male models. This time we want very feminine, pretty looking girls. Sometimes we want dusky girls. So it's not like a fixed thing. अलग टाइप के, सबका अलग स्टोरी होती है. हर एडिटर, हर कैंपेन, हर डिजाइनर का अलग डिमांड होती है. सो ऐसे अलग अलग लेवल में मैं एवरी टाइम सीखते ये इतने सारे एक्सपीरियंस हो गए. जैसे बहुत लोग बोलते हैं, अरे हम तो ना, मैं बहुत सुंदर हूं, मुझे सब लोग बोलते हैं मैं बहुत सुंदर हूं तो मैं मॉडल बन सकती हूं. सुंदरता का मॉडलिंग से कुछ लेना देना नहीं है. मॉडलिंग का और बहुत सारे एस्पेक्ट से लेना देना है. सुंदरता इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट. It's fair and thin and tall, but that's not the definition of beautiful, and that's something that the modeling industry will teach you. And अगर आप देख सकते हो, अगर आप कोई भी मैगजीन खोलो या कोई भी रैम्प शो देखो, तो there are a variety. In India has beautiful faces and interesting faces and girls with the best features from all around the country, like from the north to the south to the east to the west. Everyone looks different. अगर आप एक लाइनअप करो मॉडल्स का, तो everyone looks different. French government has gone ahead and made it illegal. अगर आप बहुत ज्यादा पतले हैं, जिसको बोलते थे ना साइज 0, वो जो हड्डियां दिखती थी, कुछ होता ही नहीं था,
So what they are saying is that you need to be toned. When you say toned, you can be toned in any shape or form. Body positivity doesn't extend to size. It extends to how you perceive your body. I have actually seen models starve. Take care of ourselves in terms of our diet. We have to be very aware of what we eat, and that's a very important for the people who don't like exercising. That could be really difficult for them. बना हुआ खाना खाना चाहिए. मैं उसमें ज़्यादा तो वही ज़्यादा पसंद है. वही घर का बना हुआ खाना. मिनिमम भी दिन में जितना भी बिजी हो 4 to 5 times खाना चाहिए. थोड़ा सा ब्रेकफास्ट थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए एंड हेल्दी घर का पका हुआ. फिटनेस इज अबाउट अ जर्नी. ओके, एवरी डे जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने पोटेंशियल के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं. ओके, और उस लेसन से आपको पता चलता है आपको लाइफ कैसे लेनी है. Because I have to runway modeling. If I have a bulky body, I can't walk properly. Because when you're working out, your whole body is stiff. Youngsters never do stretchings, never do yoga. It's all about, I have to use runway modeling. I have invented few exercise for me, for myself. So मैं shoulder नहीं करता, मैं back की exercise नहीं करता, मैं biceps नहीं करता. Because it's gonna affect my runway walk. Thighs, abs, chest, nothing else. Toning is very important. It does not matter what your measurement is. You should be toned up. खुद एक टाइम पे 97 का होता था. करते 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 because I realized that you know what, for me to feel healthy I need to tone myself. और मॉडलिंग तो एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आप कैसे दिखते हैं बहुत ज्यादा एड ऑन करता है of what you are presenting as well. Are we following the norms of what the so-called plus size model should be? No. Are we going ahead and somewhere making excuses, sorry, for the excesses that we carry and we are not even bringing them? I also feel that I was also not a very good fit for a plus size model. I just look very good. That's why they were using me everywhere, and that's very obvious. Okay. I don't think I can wear those tight fitted dresses. When they used to make me wear those, I was very uncomfortable. I used to not wear some of those because I'm not okay with wearing something tight fitted like an Ashley Graham would wear. Yeah. I wouldn't wear that. I wouldn't wear a bra and an underwear on a stage and be comfortable because my body is not like that, like hers at all. And there's a very thin line between being plus size or being fat or being obese. जिस तरह से बोलते हैं ना, हर एक इंसान इंजीनियर नहीं बन सकता, हर एक इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, उसी तरह से हर एक इंसान मॉडल नहीं बन सकता है. बहुत सारी तरह की मॉडलिंग होती है, वो मैं आपको धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे बताऊंगा कि एक मॉडल बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके अंदर क्या होना चाहिए. सबसे पहली बात, अगर आप रैंप मॉडल के लिए जाना चाहते हो तो आपके अंदर हाइट होनी बहुत जरूरी है. अगर आप फीमेल मॉडल बनना चाहते हो और आप किसी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे चलना चाहते हो तो आपकी हाइट कम से कम, जितना मुझे समझ में आता है, मिनिमम 5'7" to 5'7.5" तो होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि आज की डेट में देयर आर मॉडल्स हु आर 6'1", 6'2" फीमेल मॉडल्स हु आर वॉकिंग द रैंप. मेल मॉडल्स के लिए मिनिमम 6 फीट की हाइट होती है जो कि रैंप पर चलना चाहते हैं. 7 inches heels पहन के कौन वॉक कर सकता है? That too from morning till night. We have to be on the 7 inches heels. Do practice in a different shoes because every shoes have a different walk. Wow. Every garments have a different walk. Yes. Denims have a different walk. Yeah. If you put socks, have a different walk. Chappal is a different walk. If you wear a suit, it's a different walk. Wow. The most important is a model imbibing instructions given. Very important. You do not have to be a stunner, but you need to, and it can be a no-brainer, but somebody who follows instructions. The pageantry में हो, जैसे अंजलि ने कहा है कि you have to showcase yourself more. But when you come to the modeling mode, you have to switch. You have to make the garment, the vision of the choreographer, the designer, upper hand. ये इंडस्ट्री में हम शिफ्ट्स में नहीं काम करते हैं, हम घंटों घंटों काम करते हैं. लेकिन सिर्फ आप नहीं काम करे, सब काम कर रहे हैं. आपके लाइट टेक्नीशियन भी काम कर रहा है, म्यूजिक टेक्नीशियन भी काम कर रहा है, ग्राफिक्स who's creating your show director is working. So you have to come with that mindset that I am part of a team.
because you are part of a team. To have lots of confidence, because you will be rejected, you have to stand up for all that. If you're confident, then you will keep fighting. To make sure that you're always on time, respect everybody's time. Punctuality. It takes you a long way. Now there is no patience. अभी there इतने सारे बैंक ऑफ मॉडल्स है. अगर आप अपने शो में परफॉर्म नहीं करेंगे in terms of even showing up on time, you are replaceable. From your makeup artist to your stylist to your boys who are running your tea and coffee, every single person is there to do their job. So respect that they are there to do a job and you should be there to do yours. So you need to cut out a niche for yourself in the market. You need to make sure that your uniqueness and things that make you different actually stand out. हम जब जीजी हडीड को देखते हैं, हम बेला हडीड को देखते हैं, हमारी इंस्पिरेशन वो होती है. वो बाहर जाती है तो किस तरीके से कपड़े पहनती है, किस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज होता है. पर हम इंडिया में बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं अरे इंडिया की मॉडल्स ऐसे ही है. क्यों? क्योंकि हमने उसको बहुत फॉर ग्रांटेड और लाइमलाइट में इतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते हैं. इस वजह से हम लोगों की इतना वैल्यू है, ऐसी वैल्यू हो चुकी है. तो जरूरी है कि अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड और क्लास बना के रखना चाहती हूँ, तो वो जरूरी है कि मैं किस तरीके से बोलती हूँ, किस तरीके से बैठती हूँ, किस तरीके से खाती हूँ, किस तरीके से कपड़े पहनती हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है. Since we travel a lot, this is an opportunity where we get to travel the world, we travel domestically, internationally. So we have to be very much aware of the current affairs. So we have to involve our mind as well. So if we are hanging around with different sort of people, different culture, we do involve ourselves in the social skills, for the communication, for everything. We have to be very groom ourselves. But that is not the only career. There are a lot of other things as well, which are like advertorials, which are editorials, which are brand campaigns. वहाँ पर हाइट की जरूरत नहीं होती है. वहाँ पर जरूरत होती है कि आपकी कैमरा के साथ इंटरेक्शन कैसी है, आप कितना अलाइव हो जाते हैं जब आप उस कैमरा पे आते हैं. डू यू एड ऑन समथिंग, हाउ यू लुक इनटू द कैमरा, हाउ यू कम्युनिकेट विद द कैमरा. That is what brings on. Sometimes I imagine a model as a source of light in front of my camera. A model is my subject, it's everything. I am at that moment completely dedicated to make him or her look not only the best for him or her, because that might not necessarily work for the picture. I'm dedicated to make him or her look what works the best for the picture, right? For the project. Yeah, for the project. So for the idea of what we are shooting, for the purpose of what we are shooting. Is your skin. आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. स्किन कलर की बात नहीं कर रहा हूं, स्किन कलर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में तो जितना आपका स्किन टोन डार्कर है उतना बेटर चलता है. उसके बारे में मैं डिटेल्स बाद में दूंगा. लेकिन स्किन क्लैरिटी की बात हो रही है, तो इसलिए जो स्किन केयर के बारे में बात करते हैं ना, वो बहुत जरूरी होता है एक मॉडल के लिए, क्योंकि इतना मेकअप लगता है, इतना बालों में प्रोडक्ट लगता है, दैट इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड हेयर ऑन अ रेगुलर बेसिस, आप अपनी वो जो एक सपलनेस है, एक स्किन क्लैरिटी है, वो खो दोगे. If you work out, also if you notice, the girls who work out and everyone who works out actually looks younger than they actually are. Exactly. So the thing is, if you get older, and the thing is, working out doesn't necessarily mean that you have to be a size 0 or a size 1 or a size 2 or a size 6 or an 8 or whatever it is. It needs to be that your body looks clean and beautiful and toned. और वो कैसे साफ होती है? जब आप बहुत पानी पीते हो और वर्कआउट करते हो, बहुत मदद करता है. The world has changed, so come as I need to see you. Don't come over made up. Let me see the quality of your skin. Really important. But be ready to do the job, right? So when you come, come ready to do the job.